हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम देखेंगे कि अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, सो दिस इज़ सेकेंड सेशन ऑफ चैप्टर 1 ऑफ सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल ICAI का सेट ए का। ओके, उसका रिवीजन करते हैं हम। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स अंडर सेक्शन 152. ओके, फर्स्ट वी विल सी अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स. सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स द नेम ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर्स. ओके, जो भी कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट होता है ना, उसका नेम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट रहता है, वहाँ पे मेंशन रहता है. ओके, इन absence ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और इन absence ऑफ एनी प्रोविजंस रिगार्डिंग द फर्स्ट डायरेक्टर्स इन articles of association, subscribers to the memorandum of association deemed to be the first directors as per the Companies Act 2013. Okay, until the directors are duly appointed. And in case of one person company, individual जो भी रहता है, individual member is considered to be the first director of the company. And the term, that is the duration, will be till the first AGM of the company, first annual general meeting तक फर्स्ट डायरेक्टर टू बी अपॉइंटेड. ओके, उसके बाद उनको उनका ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा. एंड लेट्स see the steps during like steps to appoint the first directors of the company. फर्स्ट क्या करते हैं कि स्टेक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स रहते हैं ना, वो मीटिंग स्केड्यूल करते हैं एंड टेक डिसीजन मेकिंग. ओके, डिसीजन लेते हैं कि डिस्कस करते हैं कि किसको फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट करना है. उनके लाइक एक्सपर्टीज़ के बेसिस पे, स्किल्स के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं. ओके, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. एंड नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. देर विल बी टू डॉक्यूमेंट्स. वन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन and another one is articles of association. Okay, these are the two documents which needs to be prepared after decision making. Okay, then next coming to third, board resolution. Okay, company takes board resolution. Resolution mention names of the appointed directors along with their consent. Appointed director should consent to act as a director. Okay, so in the board resolution all these documents are to be mentioned, name of the appointed directors and their consent. And after that, filing of documents with ROC comes. Okay, after appointment of the directors, all those documents to be sent or filed with the ROC, registrar of companies. This includes form DIR 12, which contains details of the appointed director such as name of the director, contact details, address, proof of address. All these documents are all these information or details are considered in DIR 12, which needs to be filed by the company after appointing the director to the ROC. And next one is director identification number. Okay, director should have director identification number to be appointed as a director. And last one is legal compliance. Director should comply with all the legal requirements. Okay, next coming to appointment of subsequent directors. Every director shall be appointed by the company in general meeting. Okay, shareholders appoint the directors. Directors other than the first directors can be appointed by the shareholder in general meeting or board of directors between general meetings. ओके, फर्स्ट डायरेक्टर के बाद जो भी सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया जाता है. ओके, इन absence ऑफ, अगर इफ़ नीड परमिट्स और इन द मिडल ऑफ द ईयर अगर डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, एज एनुअल जनरल मीटिंग हैपन्स वंस इन अ ईयर, दैट इज़ एनुअली. एंड अगर टू एनुअल जनरल मीटिंग के बीच में अगर डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन डू दैट. फर्स्ट ऑप्शन इज विद द शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग. अगर टू AGM के बीच में अगर डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन अपॉइंट द डायरेक्टर्स. ओके, एंड कमिंग टू नेक्स्ट थिंग, other requirements of appointment. So first one is allotment of din, providing din and furnishing of declaration by the proposed director, written consent to act as director in DIR 12 and DIR 2 and DIR 12.
ओके रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, फर्स्ट तो अलॉटमेंट ऑफ डिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए एंड प्रोवाइडिंग ऑल दोज डिटेल्स एंड फर्निशिंग ऑफ डिक्लेरेशन और कंसेंट बाय द प्रपोज्ड डायरेक्टर एंड रिटर्न कंसेंट जो भी DIR-2 फॉर्म में है वो एंड DIR-12 फॉर्म में है वो ROC के पास फाइल करना है. DIR-2 to be filed by director to the company. ओके DIR-2 जो है ना वो डायरेक्टर फाइल करता है टू कंपनी एंड DIR-12 इज फाइल्ड बाय कंपनी टू द ROC विद इन 30 days. And another thing required is explanatory statement in case of appointment of independent director. Independent director को appoint करना है तो एक explanatory statement भी लगता है which needs to be filed by the company and it contains opinion of all the directors of the company and it is the proof of integrity independence of the person to be appointed as independent director. This explanatory statement is mandatory, okay, and it contains the opinion of all the directors and it is the proof of independence of the independent director and it should be filed by the company to the ROC. And next coming to procedure for application of DIN. Okay, how a director can apply to director identification number, which is the unique identification number to be provided by the director while appointing as a director or after appointing as a director. Okay, so let's see. First step is director needs to file an e-form DIR-3 on MCA portal or MCA website, that is Ministry of Corporate Affairs. Okay, it contains details like name, address, contact information, PAN, Aadhaar, etc. along with supporting documents like photograph, proof of identity and address of the director. And next coming to after filling the e-form DIR-3, director needs to digitally sign that form for verification. Once he digitally signed the form, he needs to pay prescribed fees for DIN allotment. Okay, and after digital sign and paying of prescribed fee, MCA will process the application after verification. If any discrepancy is found, they may request additional information. Upon successful verification, MCA will issue the DIN to directors and intimation shall be sent by email or SMS. Once director receives his or her DIN, he or she needs to inform the company. Okay, first क्या होता है कि director should file e-form DIR-3 in MCA website which contains details like name, address, contact information, Aadhaar, PAN, etc. and उसके बाद digitally sign करना पड़ेगा director को and fees pay करना पड़ेगा certain amount का. Once digitally signed and fees paid, MCA क्या करता है कि verify करता है. उसके बाद अगर any discrepancies found होता है या एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो MCA will contact the applicant and they may request additional information and upon successful verification MCA DIN issue करता है and intimation will be sent by email or SMS and director needs to intimate this to the company. And now coming to procedure to be followed by MCA. डायरेक्टर फॉर्म भरने के बाद MCA का क्या प्रोसीजर होता है वो देखते हैं. ऑन सबमिशन ऑफ द फॉर्म एंड फीस एप्लीकेशन नंबर इज जनरेटेड ऑन द सिस्टम. Central government shall process such application. Okay, approval or rejection is communicated to the applicant within 1 month from the receipt of such application, within 1 month. In case of defective or incomplete application, central government shall place it on the website or intimate by the email to the applicant. It direct to rectify the defects or incompleteness by resubmitting the application within 15 days. अगर कुछ defects है या incomplete information है तो central government direct करता है applicant को कि within 15 days application resubmit कर दें. Central government shall reject or direct to file fresh application where defect is partially rectified or information given is defective. सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेश एप्लीकेशन के लिए भी रिक्वेस्ट करता है अगर रेक्टिफाइड जो भी आप रेक्टिफाई करते हो फॉर्म वो पार्शियली रेक्टिफाई हुआ है या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन फिर से अप्लाई किया गया है तो. ओके, इन केस ऑफ नॉन रिमूवल ऑफ डिफेक्ट ट्रीट द एप्लीकेशन एंड लेबल इट एज इनवैलिड and inform the applicant of rejection or invalidation and no refund or adjustment of paid fees to be made in case of non-rectification. Now coming to liability of directors related to DIN. Prohibition of
Prohibition on obtaining more than one DIN. Director should have only one DIN number. More than one DIN number अगर होता है तो वो prohibited है and legal action भी attract हो सकता है. Director to intimate DIN within 1 month after receiving of the DIN. Company to inform the DIN to registrar within 15 days of the receipt of intimation. Director to intimate to the company within 1 month and company in turn intimate the registrar within 15 days. Okay. पनिशमेंट फॉर फेलियर टू फर्निश द डिन टू रजिस्ट्रार. अगर कंपनी फेल करता है तो 25,000 का फाइन लगेगा. इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग फेलियर 100 रुपीज़ ईच डे आफ्टर द फर्स्ट ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज एंड मैक्सिमम इज 1,00,000 रुपीज़. एंड अगर इंडिविजुअल और डायरेक्टर फेल्स टू like comply with the provisions of the related to DIN, then the penalty is 50,000 rupees, and for continuing failure each day 500 rupees. Okay, now coming to cancellation or surrender or deactivation or reactivation of the DIN. Central government or regional director, Northern Region, Noida, upon being satisfied may cancel or deactivate a DIN in case of duplicated DIN. अगर डिन डुप्लीकेट है तो एक डिन कैंसिल हो सकता है. एंड डिन वॉज ऑब्टेन इन अ रॉन्गफुल और फ्रॉडुलेंट मैनर और बाय द इंडिविजुअल और द डायरेक्टर. अगर फ्रॉड या रॉन्गफुल मैनर में डिन अप्लाई किया गया या ऑब्टेन किया गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल डायरेक्टर हैज़ द राइट टू कैंसिल द DIN. Death of the concerned individual is also the reason. The concerned individual declared to be unsound mind, it is also one of the important reason. And the concerned individual has been adjudicated as insolvent. And on an application by the DIN holder in form DIR 5 to surrender his or her DIN along with the declaration that he has never been appointed as director in any company. ओके, डुप्लीकेट डिन होता है तो रॉन्गफुल मैनर और फ्रॉडुलेंट मैनर में डिन अप्लाई किया गया है या डेथ ऑफ द कंसर्न इंडिविजुअल और अनसाउंड माइंड है या इंसॉल्वेंट है. इन सच केसेस डिन में बी कैंसल्ड एंड इफ द डायरेक्टर only request to cancel the DIN in form DIR 5, then also the cancellation request may be accepted by the central government. And central government or regional director shall deactivate the DIN of an individual who does not intimate his particulars in form DIR 3 KYC within stipulated time. अगर KYC फॉर्म में गलत इन्फॉर्मेशन है या और टाइम टू टाइम KYC फॉर्म फुलफिल नहीं किया है तो इन दैट केस ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट और रीजनल डायरेक्टर में कैंसिल द DIN. इंटीमेशन ऑफ चेंजेस इन पर्टिकुलर स्पेसिफाइड इन DIN एप्लीकेशन. अगर DIN अप्लाई करते वक्त अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपने फर्निश किया है एंड उसमें अगर चेंजेस है, फॉर एग्जांपल एड्रेस में या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में कुछ भी अगर चेंजेस है तो यू नीड टू और डायरेक्टर नीड्स टू इंटीमेट दैट चेंजेस. ओके, सो स्टेप्स क्या है? इंटीमेट सच चेंजेस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days. 30 days के अंदर, मतलब चेंजेस के 30 days के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है. सच चेंजेस कैन बी मेड इन फॉर्म DIR 6 इन द फॉलोइंग मैनर. Applicant shall download the form DIR 6 from the portal, fill in the relevant changes, verify the form and attach duly scanned copy of the proof of proof of the changed particulars and submit it electronically. जो भी स्कैन डॉक्यूमेंट है वो सब इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करना है. एंड द फॉर्म shall be digitally signed by either a chartered accountant in practice or company secretary in practice or cost accountant in practice. Okay, central government shall incorporate the changes and inform the applicant via letter, by post or electronically or in any other manner. Okay, after incorporating all those changes in electronic records, central government shall intimate those changes via post or electronic or in any other mode. And DIN cell of ministry shall intimate the ROC under whose jurisdiction that company comes in which that director is appointed. Okay, and individual to intimate the changes to the company or companies within 15 days of such change. And it is the duty of the individual director to intimate such changes to the company within 15 days of such changes. Okay, these are the very important topics for self-paced online module. एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि कौन से DIR फॉर्म किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं.
या कौन से फॉर्म अप्लाई करना है या कौन से फॉर्म फिल करना है while allotting the din or while cancellation or while changes. All these questions can be asked in MCQ. So comment your queries in comment box below if you have any. Till then, subscribe to my channel. If you like my video, then please like the video and share with your friends, and subscribe to my channel and stay tuned for more such videos. Till then, tata, thank you so much.